this. And let me share the screen. So last time हमने किया था, जैसे कि मैं repeat it again a bit. If you have a surface patch in 3 dimensions, you can, okay, if you have a surface patch in 3 dimensions, okay, and then at a point, if it is regular, you can actually draw a tangent plane. And tangent plane has this normal, and the surface unit normal at this point. Now, if you take another plane which contains this surface normal, it intersects the surface in a curve, and this curve is called normal section. And when you rotate this around this normal, you get infinitely many normal sections at this point P. And there are 2 special normal sections. Among these normal sections, what we call principal sections. They are those normal sections which have the least and highest curvature as plane curves. And we call them principal sections, or उनके curvatures को हमने कहा principal curvatures. And then we showed that at a point, these principal curvatures, जिनको हमने denote किया by K sub A and K sub P, are roots of this quadratic equation, h square kn square minus en plus gl minus twice fm times kn plus t square is equal to 0. So the solutions इसके हैं जो roots हैं, which we can derive actually. It's a quadratic equation. We can solve it and find k and kb, which are the principal curvatures. And of course, तुम्हें पता ही है यहाँ पे है क्या, E, F, G are first order fundamental magnitudes. Evaluated at the point of the surface. And then I have L and M, they are second order fundamental magnitudes. But of course, H square is nothing but EG minus F square. And T square is nothing but Ln ln minus m square. नहीं यहाँ ठीक है, EG minus F square होता है, whatever. Ln minus m square. अभी पता चल जाएगा. It is EGFF, so it is EG minus F square. So it should be Ln minus m square, whatever. So these are. तो उससे हमें एक चीज मिली. Now there are certain definitions, you know. इनका जो एवरेज है now, so अभी तक हम ये कर चुके हैं कि ये जो प्रिंसिपल कर्वेचर्स है या जो ये प्रिंसिपल डायरेक्शंस हैं, ये along which the least वो curves along which we have the least normal curvature and the highest normal curvature, तो they are orthogonal. तो वहां तक हम कर चुके हैं. Now the next thing is, these are just definitions. The mean curvature, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ some definitions. Some definitions. I have some notations. See, the mean curvature of the surface at a point of this of the surface at a point mu is just the average of these two. Ka plus Kp, which should be nothing but 1 by 2, because these are some of the roots. So 1 by 2 into should be En plus Gl minus 2Fm divided by h square. Similarly, there is something called the amplitude of normal curvature. The amplitude
although we are only interested in Gaussian curvature, frankly speaking, in our course, still you can just remember them. The amplitude of normal curvature is defined as A. That's the difference between the two, basically, divided by 1/2. It is just this thing. Okay. So we can, so that इससे हमें ये भी मिल सकता है कि KA is equal to mu plus A and KB would be mu minus A, where mu is this is just a simple substitution, is the mean curvature defined above. Then we have what we call first curvature, which has some of them. First curvature J is defined to be J is equal to K sub A plus K sub B, which means it's twice the mean curvature, which again would be, of course, En plus GL minus twice Fm divided by h square. And of course, the important thing is this quantity, the Gaussian curvature. Gaussian curvature K of a surface at any point is defined by K is equal to K sub A into K sub B, which in this case is just ln minus m square divided by actually d square by h square, which is the same thing as ln minus m square divided by eg minus f square. Okay. तो ये क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, मतलब दिस इज बेसिकली व्हाट वी जब अगर कोई बोले कर्वेचर एट अ सरफेस एट अ पॉइंट ऑन अ सरफेस, बाय दैट वी मीन द गॉसियन कर्वेचर, वी आर रेफरिंग टू दिस। तो इस तरह से हमने डिफाइन किया कर्वेचर एट अ पॉइंट ऑन अ सरफेस। हमने क्या कहा, हमें पता है व्हाट इज कर्वेचर ऑफ अ कर्व, हमने डिफाइन कर चुका है। हमने दो स्पेशल कर्व्स दी हर पॉइंट पे विच आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। हमने कहा इनके कर्वेचर्स का प्रोडक्ट जो होगा उसको हम डिफाइन करेंगे curvature at that point on a surface. So there is something called minimal surface. चलो definition है, minimal surface वो है जिसका mean curvature 0. Mean means the sum of the curvature. The surface is called a minimal surface अगर उसके हर point पे surface is called a minimal surface, and these are important surfaces. Minimal surface if its first curvature is 0. Yeah, mean curvature दोनों एक ही बात है, क्योंकि first curvature is twice the mean curvature, is 0 at all points. मेरे कहने का उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब KA plus KB is 0, which implies that, so that is therefore, which implies that En plus GL minus twice Fm is equal to 0. इसका मतलब उनके जो प्रिंसिपल कर्वेचर्स है एसेंशियली वो होते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट है। इसका मतलब ये भी है ना के ए इज इक्वल टू माइनस के बी, मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, लेकिन बराबर इन मैग्नीट्यूड। तो यूजुअली जो सोप बबल्स बनते हैं, अगर तुमने कभी बनाया, तुमने कोई फ्रेम लिया, फिर अगर तुम इसमें सोप में इसको डिप करोगे तो एक सरफेस बनेगी। So they usually are minimal surfaces. A good example of minimal surfaces, I should say. And there is something called umbilics or navel points. Umbilics or navel points.
So if E, F, G and LMN are proportional, at a point on a surface, it is called an umbilic point, simply umbilic, or a navel point. Navel point. That is, the point is an umbilic point, yeah, simply umbilic, if E by L is equal to F by M is equal to G by N. ठीक है ना? तो ओके, सो व्हाट डज दिस मीन? तो हम कर चुके हैं ये कंडीशन, हमने कहा था अगर ऐसा है तो अगर ये हर पॉइंट पे ऐसी सिचुएशन हो तो देन दैट सरफेस मस्ट बी अ स्फीयर और अ प्लेन, राइट? सो यानी स्फीयर का हर कोई पॉइंट अम्बिलिक, लेकिन कभी सरफेसेस में कभी कभी कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ये ट्रू होता है, जैसा कि मैंने बोला था पैराबोलॉइड में ये जो वर्टेक्स बनता है नीचे, पैराबोलॉइड का मतलब है कि z इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर तुम पैरामीटराइज करना चाहो तो चूंकि ये मोंजिस फॉर्म है, यू कैन राइट r at uv is equal to u v u square plus v square। तो ये इन्फिनिटली जा रहा है दोनों डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो इसका ये वर्टेक्स है दैट्स एन अम्बिलिक पॉइंट, अदर देन दैट कोई अम्बिलिक पॉइंट नहीं है। स्फीयर जो है वहां पर हर कोई पॉइंट अम्बिलिक है। सो अगर ऐसा हो, सो मैंने क्या लिखा, पॉइंट इज अम्बिलिक इफ दिस इज ट्रू एंड that means, it means that अगर हम देखें, therefore the coefficients of the differential equation, coefficients of differential equation are all zero, hence principal directions, coefficients of difference equation, कौन सी difference equation of the principal directions, hence the principal directions are indeterminate. मैं तुम्हें बता दूं what was our differential equation of the principal directions, that was basically this, क्या थी वो, it was em minus fl into du square plus en minus gl du dv plus fn minus gm into dv square is equal to 0. This is what gives us the principal directions. तो वो directions मतलब we can't find them. That means जो इनका जो principal curvatures होगा ऐसे point के लिए वो हर direction में same होगा. So there would be no distinct two directions at a point under which ना जहाँ पे principal section का जो curvature है वो maximum या minimum होगा, क्योंकि वो हर direction में same होगा at a point, at an oblique point. और जाहिर सी बात है अगर ये तो मेरे कहने का मतलब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, so you can't find them, they are indeterminate. What should be d or dv? कि जहाँ पे वो principal sections हमें मिले, which means that मतलब there is no condition on a direction being principal, which means every direction is a principal direction, क्योंकि वो restriction वाली equation ही खत्म हो जाती है, या वो उससे हमें कुछ condition ही नहीं मिलती for under what condition should the direction be a principal direction. Obviously ये क्यों होगा, because P by L is equal to F by M is equal to EFG by N. But obviously what would be EM? EM minus FL 0 होगा, FM
ठीक है, ये 0। इसी तरह से en माइनस जी एल, भी 0, और अगर इससे लेंगे fn माइनस जी एम, ये भी 0। Anyway, so indeterminate हो जाएगी, hence the normal curvature has the same value in all directions. Hence, the normal curvature has the same value in all directions. Okay. एंड अगर ऐसा नहीं है तो देन वी नो इससे पहले ही कि प्रिंसिपल डायरेक्शन है ऑर्थोगोनल। मतलब मैंने कहा था स्फीयर पे हर कोई पॉइंट जो है वो ऑर्थोगोनल है, मतलब दैट इज रादर ऑब्वियस, क्योंकि अगर मैं लूंगा यहाँ पे एक सरफेस नॉर्मल लूंगा, देन आई टेक दिस एंड कट दिस प्लेन, मतलब जो कर्व हमें मिलेगी जो ना इसको कट करेगी वो एक सर्कल होगा। और अगर मैं इसको, इसका कर्वेचर क्या होगा, सर्कल का कर्वेचर होता है 1/r, जो इसकी रेडियस है। और अगर मैं दूसरे डायरेक्शन में इसको रोटेट करूंगा तब भी वो वही सर्कल होगा, ग्रेट सर्कल। तो हर पॉइंट जो नॉर्मल सेक्शन का होगा एनी प्लेन, बिकॉज जो नॉर्मल होगी एट अ सरफेस इट वुड बी मतलब डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर मैं इस प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा सरफेस को, मतलब जो भी प्लेन इसको इंटरसेक्ट करेगा, इट मस्ट गो थ्रू द ओरिजिन। देयरफॉर जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन होगी स्फीयर पे, it would be the great circle, the circle which has the same radius as that of the sphere। और उसका कर्वेचर जो होगा, सर्कल का कर्वेचर होता है 1/r, जो रेडियस है। तो 1/r हर डायरेक्शन में आ रहा है, यानी हर किसी डायरेक्शन जो है ना, जो नॉर्मल सेक्शंस का जो कर्वेचर आएगा वो 1/r आएगा, which means it would be same for all normal sections, so all sections would be मतलब same। लेकिन अगर सरफेस इधर उधर की हो, other than the sphere, other than, so then of course क्या बोलते हैं, you would have two special normal sections which would be mutually orthogonal, and उनका जो curvature होगा एक का सबसे ज्यादा होगा among the normal sections at that point, और दूसरे का सबसे कम होगा among the normal sections at that point। Okay, now we talk about something called a line of curvature। So it is the same thing pretty much, surface पे जाएं, line of curvature। लेकिन अब मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा, देखो ये जो डिफाइंड है ना प्रिंसिपल डायरेक्शन, दे आर डिफाइंड एट अ पॉइंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायरेक्शन में वो इस पॉइंट पे एक प्रिंसिपल डायरेक्शन, लेकिन अगर मैं यहाँ पे होगा तो दूसरी प्रिंसिपल डायरेक्शन होगी, राइट। लेकिन अब ऐसा हो सकता है ना कि अगर मैं ऐसे, मतलब मैं एक पॉइंट पे मैंने प्रिंसिपल डायरेक्शन ढूंढी, तो इस तो टेंजेंट इस तरह से आएगा, तो फिर दूसरे साइड पे से तो दूसरी ऐसे आएगा। तो अगर मैं उनको ऐसे ट्रेस करूं कर्व को कि मेरे जो उसके जो प्रिंसिपल डायरेक्शंस के पैरेलल में जा रहा हूँ, यानी मैं एक ऐसी कर्व अगर सरफेस पे है, मतलब सरफेस हो सकती है ना यार ये कॉम्प्लिकेट, अब हर पॉइंट पे मैंने लोकली उसकी प्रिंसिपल डायरेक्शंस डिफाइन की, या तो ये है या ये है। अब मान लो मैं हर किसी जगह इस तरह से ले रहा हूँ, मतलब मैं दूसरे पॉइंट पे गया, वहां एक प्रिंसिपल डायरेक्शन थी। अगर मैं अब ऐसी कर्व मेरे पास हो जिस, मतलब कर्व ऑन द सरफेस, ऐसी कर्व की हर जगह पे उसका जो टेंजेंट हो वो पैरेलल हो टू द प्रिंसिपल डायरेक्शंस एट दैट पॉइंट, तो जो वो कर्व बनेगी ऑन द सरफेस उसको हम कहेंगे लाइंस ऑफ कर्वेचर। तो लाइन ऑफ कर्वेचर ऐसी है कि उसका टेंजेंट जो है that is at any point on that curve on the surface is parallel to the principal directions। क्योंकि principal directions हमने define किए at a certain point, and basically it would satisfy the same differential equation as the one for the principal directions at that point। क्योंकि of course differential equation is an equation for tangents dy by dx। तो अगर वो सेम रहता है हर जगह तो डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी द सेम। तो लेट मी राइट इट डाउन, we write down a line of curvature on any surface is a curve, a line of curvature on any surface at a point, hey,
surface point भी defined नहीं है because it's a curve, and any surface is a curve such that tangent line to it at any point, such that tangent line to it at any point is a tangent line to the principal sections of the surface at that point. हम वही डायरेक्शन फॉलो करेंगे जो प्रिंसिपल डायरेक्शन है। अगर हर पॉइंट पे ऐसे ही कुछ करें, जो कर्व जनरेट होगी उसको हम कहेंगे लाइन ऑफ कर्वेचर। ओके, बेसिकली इट अगेन, मैं फिर से यही कहूंगा, ये एक तरह से मतलब देखो, एक होता है, मैं मान लो तुम्हें स्फीयर बनाना है, ठीक है, और तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो पहले तुम एक ढांचा बनाओ, इस टाइप का ढांचा, मतलब तुम ढांचा ऐसे भी बना सकते हो ना, तुम जो लकड़ियां तुम लोगे, मतलब जो ना उसको मान लो तुम्हें पहले उसका वो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, उस पर तुम कपड़ा ओढ़ के, तो जो तुम उस पर फिर कपड़ा ओढ़ के उसको स्फीयर बनाओ, राइट। एक तरीका है कि तुम कुछ भी ले लो और उसको फिट कर लो, मतलब तुम्हारे पास एक स्फीयर है, मेरे कहने का मतलब है, मान लो तुमने अपने ढांचे की लकीरों को ऐसे लिया, ऐसे लिया हो, फिर ऐसे लिया हो, ऐसे लिया हो, नो इश्यू, तो ढांचा बन गया, उसके ऊपर कपड़ा चढ़ गया, बन गया स्फीयर, राइट, है ना। लेकिन अगर तुम अपना ढांचा ऐसे लोगे कि वो कर्वेचर के हिसाब से चले, जैसे सरफेस घूम रही है वैसे ही वो भी जा रहा है, जैसे अगर तुम अच्छा ढांचा होता, अगर तुम ऐसे बनाते, ऐसे बनाते, तो ऐसे बनाते, जो ना, जो उसके मोड जो है सरफेस के, उसको एक तरह से मतलब उसको दिखाए, उसको मैनिफेस्ट करे, तो वो कर्व जो स्फीयर की है ना, उसको हम बोलते हैं बेसिकली, मैं तुम्हें रफली बताऊं, दोज आर माय लाइंस ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं तुम्हें स्फीयर की बात करूं तो इसकी लाइंस ऑफ कर्वेचर होगी, एक तो ये सर्कल्स, इस तरह से, जो एक तो ये है ना, एक तो ये सर्कल्स, और दूसरे ये सेमी सर्कल जो ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ऑल तो मैं और किसी ढांचे को खड़ा करके भी एक स्फीयर की शक्ल दे सकता हूँ। तो ये स्पेशल कर्व्स हैं जो मैनिफेस्ट करती है वो जो स्फीयर जो है उसका जो मुड़ना है, तो इसीलिए हम इनको लाइंस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और आई कुड टेक अ सिलेंडर, सिलेंडर की लाइंस ऑफ कर्वेचर क्या होनी चाहिए, मतलब एक तो होनी चाहिए लाइंस, और दूसरे होनी चाहिए सर्कल जो इसको घुमाते हैं, दीज कर्व्स वुड बी लाइंस ऑफ। हालांकि मैं ऐसे भी, ऐसे ढांचा कर मैं खड़ा करूँ ना, इस तरह से, इस तरह, तो भी वो सिलेंडर बन जाए, तो ये भी कर्व्स होंगी सिलेंडर पे, और इनफैक्ट पैरामीट्रिक कर्व्स, लेकिन दे वोंट बी लाइंस ऑफ कर्वेचर। और तुमने दोनों ही जगह पे देखा, जब मैंने कहा लाइंस ऑफ कर्वेचर दे आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, चाहे मैंने इसका कहा स्फीयर का या सिलेंडर का, मतलब लाइंस ऑफ कर्वेचर है, दे आर ऑर्थोगोनल because they follow the directions of the principal directions. The tangents are the same, so therefore they must be orthogonal. So anyway, तो ये line of curvature का ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन but just imagine जो मैं कह रहा हूँ। हम एक theorem कर सकते हैं जो कि बड़ा straight forward है, उतना है नहीं, वो ये कि a curve on a surface, this could be an equivalent definition for the line of curvature. A curve on a surface is a line of curvature. It's a line of curvature if and only if the normals at two consecutive points, if and only if the normals at any two consecutive points actually on that curve intersect.
तो प्रूफ हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है अगर कोई लाइन यहाँ पे है जो लाइन ऑफ कर्वेचर है, तो ऐसा होगा कि ये जो पॉइंट है अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल डालता और यहाँ पे नॉर्मल डालता, बिल्कुल जो इन्फिनिटली क्लोज जो भी नेक्स्ट पॉइंट है कितना भी मैं नजदीक जाऊं दूसरा पॉइंट जो से ही होगा, वो नॉर्मल्स पैरेलल नहीं होंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे स्फीयर पे, स्फीयर एक अच्छी एग्जांपल है। अगर तुम इसका ग्रेट सर्कल लोगे, मतलब विच इज अ लाइन ऑफ कर्वेचर ऑन द स्फीयर, यानी जिसको मतलब द सर्कल विद द सेम रेडियस एज द स्फीयर, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स लोगे उनके दरमियान जो नॉर्मल्स हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स प्रूव इट। प्रूव करना ज्यादा मसला नहीं है। सो लेट प्रूफ इसका, फिर हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं लाइन ऑफ कर्वेचर ऐसी कर्व है कि अगर मैं दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स पे नॉर्मल्स लूंगा उस पे वो इंटरसेक्ट करेंगे। लेट n this and n plus some dn be the unit normals at two consecutive points P, let's call that with position vector R, and Q R plus dr. मतलब जब मैं ये कह रहा हूँ तो मेरा मतलब है, अब तो मैं इसको मैग्नीफाई कर रहा हूँ, मतलब ये कोई लाइन ऑफ कर्वेचर है उसके बिल्कुल इन्फिनिटली क्लोज हैं दो पॉइंट्स, राइट। और ऑफ कोर्स ये P है, ये Q है, इसका पोजीशन वेक्टर मैं कह रहा हूँ R है, इसका पोजीशन वेक्टर है R plus dr। और ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसकी नॉर्मल है से n, इसकी नॉर्मल है n plus tn। मैं दिखाऊंगा ये इंटरसेक्ट करेंगे, they won't be parallel vectors if these two points are consecutive points, neighboring points on the line of curvature. Anyway, okay. So take, so let the direction of this point, of course, this change corresponds to some change in the parameter. So let's write it down. Let the direction of QR be represented by, let the direction of this point Q with position vector R plus dr be du dv. By that I mean, once I go from this point to this point, the parameter change hogi. Of course, these are the points in the range, so I have a domain UV plane. तो जिसमें जो ये पॉइंट इधर मैप हुआ होगा, ये पॉइंट इधर पॉइंट हुआ मैप हुआ होगा, तो उसमें जो डिफरेंस है, जो ये लेंथ है, सो इसमें जो चेंज है वो है, मतलब अगर इसका यू बी है पहले वाले का, दूसरे का यू प्लस डी यू बी प्लस डी। एनीवे, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ये है, if the normals and P at Q, if the normals at P at Q, P and Q intersect, when Q intersect, then what? Then vectors n plus dn and dr must be coplanar. मेरे कहने का मतलब है अगर ये इंटरसेक्ट करता है यहाँ पे ऐसे, ये n है, ये n plus dn है, ऑफकोर्स इनको अगर मैं जोड़ दूं p and q को, ये वाला वेक्टर जो है ये n है, n plus dn है, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, because this is my vector dr, so they must lie inside a plane because a triangle always lies in a plane. अब प्लेन में रहने का मतलब उनका जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है, it must be zero, and hence their triple scalar product must be zero, which means I must लिखता हूँ n plus dn and dr. And you have to remember this triple scalar product is basically a determinant. So where these are the rows
This is the columns मान लो, rows मान लो. So these are the columns of that determinant. अगर columns हैं, so this would imply that n comma n, this is the same thing as dr plus n comma dn, dr must be equal to 0. Because these are two determinants, I can just separate the middle row, but split it and write it as the sum of two determinants, which are two scalar products again. लेकिन यहाँ पे अब दो columns same हैं इस determinant के, तो वो 0 है. So it implies that then this must be 0. n dn dr must be equal to 0. Let's call this equation now. Okay. Now we know that the differential of dn is by, because n is a differentiable function, it is n sub u du plus n sub v dv, and dr is equal to r sub u du plus r sub v dv. अगर मैं इसको substitute करता हूँ, so therefore from 1 I have got n sub u du plus n sub v dv, then r sub u du plus r sub v dv, this triple scalar is equal to 0. Now what we do, हम again determinant की तरह इसको सोचते हैं, इसको split करेंगे. तो पहले अगर मैं split करूंगा तो I will get this, ये ऐसा ही रहेगा, इसको दो break होंगे, तो फिर उन दो को और दो break होंगे. मेरे कहने का मतलब है it's like this. अगर यहाँ तो मैं दिखाऊं, it's like a vector b plus c d plus e, ना ये तीन वेक्टर इस तरह से हैं. Now अगर मैं इसको डिटरमिनेंट की तरह सोचूं और इसको कॉलम सोचूं, तो पहले मुझे मिलेगा दिस इज इक्वल टू, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इट इज इक्वल टू, it would be a then b d plus e, right, plus a c d plus e, right. Again using the same, अब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये बन जाएगा a b d plus a b e, ये चार बन जाएंगे इसके. इसी तरह से ये जो दूसरा वाला, इसको फिर से स्प्लिट करेंगे एज अ डिटरमिनेंट, इट वुड बी ए सी टी प्लस ए सी ई. तो वही ये चार डिटरमिनेंट बनेंगे, जिसको मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा. ये बन जाएगा n सब u du r sub u du, right, plus I have n sub v dv, then I have n sub, I should write r sub u dv du हो जाएगा, plus n sub u d, nv dv, n sub v n sub u, ठीक है, du r sub v dv, plus then I should have, I think, n rv dv, sorry, nv dv rv dv. This thing is equal to 0. अब क्या करेंगे? This is a scalar that is multiplied to this column. This is a scalar multiplied with this column. तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं. यानी I should get basically n sub u r sub u whole multiplied du बाहर, so it should be du square plus I think I should have n sub v r sub u plus n sub u r sub v. दोनों में जो कॉमन हमें मिला वो बेसिकली है du dv प्लस लास्ट वन होगा n वेक्टर
comma NV RV square product dV square. This is equal to 0. Now what I will use, ये हमने evaluate किए थे जब मैंने कहा था इनको हम आगे यूज करेंगे इन ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट्स को. तुम चाहे तो अभी कैलकुलेट कर लो या फिर उनको यूज कर लो सीधे ही, अगर तुम्हें याद है. वैसे हमको याद रखना चाहिए, और अगर कभी दिक्कत हो तो इवैल्यूएट कर लो. हमने किए हैं इससे पहले, तो चूंकि मैंने कुछ खुद किए थे, कुछ में होम असाइनमेंट दिए थे उनमें से. सो अगर मैं वो यूज करूंगा, यानी मैं ये यूज करूंगा कि n कॉमा n सब u r सब u n भी वेक्टर है. दिस इज इक्वल टू em माइनस fl डिवाइडेड बाई h. इसी तरह से n nv r सब u, ये हमने इवैल्यूएट किया था, ये स्केलर प्रोडक्ट to be equal to fm minus gl divided by h. इसी तरह से हमने किया था n sub u r sub v, ये जो स्केलर प्रोडक्ट है बराबर en minus fm divided by h. और last but not the least n sub v r sub v, ये हमने इवैल्यूएट किया था to be fn minus gm divided by h. अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो अगर मैं इसका नाम दूं सेकंड, तो so now these are equal to this. Therefore from second I should get em minus fl divided by h whole multiplied by du square plus क्या था, then I got this in this fm minus gl divided by h plus en minus fm divided by h. कुछ करो तो मैं fm कुछ माइनस आना चाहिए. प्लस में कुछ रिपोर्ट कर दी. I got fm minus gl and en minus fm. ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा है, जब हमने रोज को इंटरचेंज किया था. ओके, देखते हैं अभी क्या आएगा हमारा. du dv, then I have fn minus gm divided by h times dv square is equal to 0. तो इससे मुझे मिलना चाहिए, देखते हैं, which gives us en minus fl. h से थ्रू मल्टीप्लाई किया, वो नॉन जीरो है for a regular point. So this should be du square. इनको ऐड करते हैं, h कॉमन है, you should get fm cancel, so it is en minus gl times du dv plus fn minus gm times dv square. But this is the same difference. जो principal directions की differential equation है वो तो यही है. Which is the differential equation? But this is the differential equation of the lines of curvature, because it is the differential equation of the principal directions. Therefore, by definition, this is the differential equation of the lines of curvature. So what does that mean? Thus what? If the normals intersect at consecutive points, of a curve, the curve must be a line of curvature. Conversely,
suppose that a curve is a line of curvature. Then its differential equation will be given by the same thing. यानी वो क्या है? En minus FL times du square plus En minus GL du dv plus Fn minus Gn dv square is equal to 0. Now reversing the steps, वही करेंगे जो हमने इससे पहले किया था उसका reverse. Reversing the steps in the above argument, मेरे कहने का मतलब है जैसे हमने वो किया था ना इससे पहले वाला हमारा आर्गुमेंट, अगर ये 0 है तो फिर ये 0 है, फिर पीछे जाएंगे हम तो फिर ये 0 होना चाहिए, फिर ये 0 होना चाहिए, फिर ये 0 होना चाहिए, फिर रिवर्स करते करते हम पहुंच जाएंगे this must be 0. So we get, by reversing the argument, we get, हम पहुंच जाएंगे इधर n dn dr must be equal to 0, which implies that n plus dn, because I have just added the 0 to the left hand side, so this must be equal to 0, which implies that n plus dn dr are coplanar, that is n and n plus dn intersect. Okay, so we're done. So अब हम ऐसे भी कह सकते हैं लाइंस ऑफ कर्वेचर वो कर्व है सरफेस पे जहां पे अगर मैं दो नेबरिंग पॉइंट्स बिल्कुल ना जो इन्फिनिटली क्लोज हैं उन पे अगर मैं नॉर्मल्स लूंगा किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे ऑन द लाइन ऑफ कर्वेचर दे मस्ट इंटरसेक्ट, वैसे भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट है हमारा तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लाइंस ऑफ कर्वेचर तुम्हें पता ही है, लेकिन वो थोड़ा याद रखना मुश्किल है, इसलिए हम इसको ऐसे भी याद रखते हैं. हमें क्या चाहिए? वी वांट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन En FL into du square plus En minus GL times du dv plus Fn minus Gm times dv square, this must be equal to 0. फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जस्ट मतलब इसको ठीक से याद रखने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म मैं लिखूंगा dv स्क्वायर माइनस du dv du स्क्वायर और यहाँ लिखूंगा e f g and then l and n. ये डिटर्मिनेंट अगर 0 करूंगा तो you will get this differential equation. मतलब इसको ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं. Okay, the next thing is कि अगर हम अपने स्पेशल सिंपलेस्ट मतलब हमें हैंडल करना होता है वो होती है मॉन्जिस फॉर्म, क्योंकि वहां पे पैरामीटराइजेशन है स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ, मतलब ये तुम ऐसे होम साइन कर सकते हो, तो आई मीन डिफरेंशियल इक्वेशन चाहूंगा ये तुम करो, इक्वेशन ऑफ the lines of curvature on the surface z is equal to f of x. जिसको हमने कहा है Monge's surface या Monge's form. तो
अब इसमें क्या है, मतलब यही डिफरेंशियल इक्वेशन है हर सरफेस के लिए ना, लेकिन हमें पता है, मैं थोड़ा इसको हिंट, मतलब यार तुम्हें करना कैसे होगा, तुम्हें ई इवेलुएट करना होगा, लेकिन वो हम कर चुके हैं। इट इज 1 + p स्क्वायर, इसी तरह से एफ है पी क्यू, और जी अपना है वो होगा 1 + q स्क्वायर, एंड इसी तरह से h हमने लिया था, दैट वाज 1 + p स्क्वायर + q स्क्वायर, where p is actually del f by del x, और q जो है वो है del f by del y। इसी तरह से तुम L is equal to R by H, M is equal to S by H, and N is equal to T by H, where of course R is del square F by del X square, S है del square F by del X del Y, and T is equal to del square F by del X square del Z। ठीक है, तो ये सब कुछ हम जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे EFG, लेकिन तुम करोगे घर पे EFG एलिमेंट के लिए, तो what you will get a differential equation of this form। तो मैं यहाँ लिख के रखता हूँ, तुमको चेक कर सकते हो फिर। It will be S into 1 + p square minus RPQ whole। अब u की जगह यहाँ पे x होता है ना, u की जगह x है और v की जगह y है, यहाँ पे आएगा dx स्क्वायर प्लस इसी तरह से t into 1 + p स्क्वायर minus r into 1 + q square into dx dy plus tpq minus s into 1 minus q square into dy square equal to 0। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। और तुम उस डिटरमिनेंट की मदद से हमेशा इसको इवैल्यूएट कर सकते हो जल्दी, मतलब ई को यहाँ से बजाय इसके सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसमें सब्स्टिट्यूट करो, देन इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड यू विल गेट इट। नाउ इसके बाद आई थिंक इसके बाद हम कल करेंगे, तो हम देखेंगे कि क्या हम इनको, मतलब वी वांट टू, आइडिया ये होगा ये जो लाइंस ऑफ कर्वेचर है, कैन वी टेक देम टू बी पैरामीट्रिक कर्व्स, एंड वी कैन, क्योंकि हमें पता है ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब इनके जो टेंजेंट्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वो एक ही डायरेक्शन में नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है इनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। और हमने एक किया भी था कि यू कैन ऑलवेज have a change of parameters so that the parametric curves are orthogonal। So the lines of curvatures they do form mutually, they are orthogonal trajectories of each other। So there is a, मतलब हम treat कर सकते हैं as parametric curves, जो हम कल करेंगे।